Welcome back, guys. You're watching Engineering Civil Academy YouTube channel. Today we are starting with a new topic, that is water supply engineering. This is lecture 1. Today we basically discuss the quality of water, in which we will discuss in detail what are the various physical water quality parameters. So starting with what is raw water. Raw water is it is the water which is being extracted from the natural environment over which no artificial treatment is performed, right? So this is the raw water. So basically अगर फ्लो चार्ट देखेंगे तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में बेसिकली हम ओवरऑल क्या देखते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सोर्सेज एस सोर्सेज ऑफ रॉ वाटर. उसमें क्या करते हैं फिर हम पाइप 1 विद द हेल्प ऑफ पंप इज पंप, पाइप 2 P2 लिख लेते हैं. कहाँ पे चला जाता है? ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है. ये ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे रॉ वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं. फिर उसके बाद फर्दर पाइप 3 सर्विस रिजर्वायर SR, दैट इज स्टोरेज. बेसिकली दिस इज स्टोरेज. एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है घरों में वाटर सप्लाई के लिए. दिस इज योर बेसिक लेआउट और फ्लो डायग्राम. नेक्स्ट इज योर क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर. क्वालिटीज ऑफ वाटर. बेसिकली क्वालिटीज ऑफ वाटर क्या चीज है? These are the parameters that helps in determining determining the characteristics of the water. ठीक है? This is basically termed as qualities of raw water. Basically, there are three qualities we are going to discuss. That is, first is your physical water quality parameter, right? Second is chemical water quality parameter. Third is biological वाटर क्वालिटी पैरामीटर. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर. फिजिकल वाटर क्वालिटी, राइट. बेसिकली इसमें कौन से पैरामीटर
जो हमें फिजिकली वाटर की क्वालिटी एनालाइज करने के लिए हेल्प करते हैं. दीज आर, फर्स्ट इज suspended solids, second is turbidity, third is color, fourth is taste and odor, fifth is temperature. So these are the five water quality parameters helps in determining the physical quality of the water. तो ये बेसिकली फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर इनको इसलिए कहा गया है बिकॉज these parameter these parameters these parameters can be felt or sensed by senses. तो हम अपनी कोई भी सेंस से ये पता लगा सकते हैं ये वाले पैरामीटर जो पांच हमने ऊपर लिखे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैरामीटर दैट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स. तो बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड्स आते कहाँ से हैं, सोर्सेज क्या हैं इनके. दी सॉलिड्स आर being added in water due to inorganic particles, organic particles. ठीक है. थर्ड में इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इमिसिबल लिक्विड्स. इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स में बेसिकली इसमें आ जाते हैं क्ले, शेल एक्सेट्रा. ठीक है. इनऑर्गेनिक में एल्गी, प्लांट फाइबर्स एक्सेट्रा. So these are the particles that may be added into the water in the form of suspended solids. तो इनके impacts क्या क्या रहते हैं. impacts बेसिकली इनके impacts क्या रहते हैं. बेसिकली इट मेक्स द वाटर एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग, है ना. अगर इसमें कुछ कोई किसी भी तरह की इम्प्योरिटी होगी जो कि नेकेड आई से विजिबल है ना, तो उससे इसकी एस्थेटिक जो है वो अफेक्ट होगी. ठीक है. इट इज वन ऑफ द impact that has been reduced by the suspended solid. और इसमें बेसिकली क्या है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, एड्सॉर्प्शन साइट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द वेरियस केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेडिएंट्स, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी, जब हम ट्रीटमेंट में केमिकल्स यूज करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम कर देते हैं. ठीक है. तो हम लिख लेते हैं. इम्पैक्ट क्या होता है. इट मेक्स द वाटर एस्थेटिकली डिसप्लीजिंग. तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंड्यूस करते हैं. ठीक है. सेकंड क्या करते हैं ये,
there are some there are some SS means suspended solids which provides which provides adsorption sites for various chemical and biological reagents, thereby reducing their efficiencies एफिशिएंसी रिड्यूस कर दे। तो ये इसके इम्पैक्ट है। और नेक्स्ट, हाउ टू मेजर सस्पेंडेड सॉलिड्स, मेजरमेंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। इसके लिए जो मेथड है उसका नाम क्या है, ग्रेविमेट्रिक मेट्रिक मेथड। बेसिकली जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं और एक डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं, डिसॉल्व सॉलिड्स बेसिकली आर द केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, तो टोटल सॉलिड्स की अगर बात करें हम, टोटल सॉलिड्स comprises suspended solids SS and DS dissolved solids। एक बार लिख लेते हैं बात, इसके बाद हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। suspended solids, dissolved solids। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, अगर हमें टोटल सॉलिड्स को पता करना है तो फॉर एग्जांपल दिस इज any beaker in which we have taken the test sample, or you can say the wastewater, और इसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो कुछ विजिबल है, इनविजिबल भी होंगी, जो डिसॉल्व सॉलिड्स हैं वो इनविजिबल भी होंगी। ठीक है, तो टोटल सॉलिड्स ये जो ब्लू वाले पार्टिकल है, दीज आर द इम्प्योरिटीज, और यू कैन से सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, और आपको अगर टोटल सॉलिड्स पता करना है तो क्या करोगे, टोटल सॉलिड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टू डिटरमिन टोटल सॉलिड्स, what we'll do, heat the test sample at temperature of 104 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप इसको हीट कर दीजिए, जो भी रेजिड्यू रह जाएगा, रेजिड्यू लेफ्ट विल गिव्स यू द टोटल सॉलिड्स। आप उसको वेट कर लीजिए। ठीक है, दिस इज द वे यू कैन फाइंड योर टोटल सॉलिड्स। और इसके बाद आ जाते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप क्या करिए, टेस्ट सैंपल, लेट्स राइट फर्स्ट, और सस्पेंडेड सॉलिड्स।
First, what will we do? Test sample is passes through the filter paper. उसको फिल्टर पेपर से पास करवाते हैं. उस पे जो भी सॉलिड्स रिकवर हो जाएंगे, सॉलिड्स रिकवर्ड over the filter paper are the suspended solids. ठीक है, वो आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स आ जाएंगे. और टोटल सॉलिड्स आपको पता ही है, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. तो डिजोल्व सॉलिड ds कितना हो जाएगा? इट इज टोटल सॉलिड्स माइनस सस्पेंडेड सॉलिड. फाइंड आउट कर सकते हैं आपके सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजोल्व सॉलिड. और एक इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक सॉलिड्स. ठीक है, तो बेसिकली हम थोड़ा सा और डीप में चल सकते हैं इसमें. एक होता है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? these are these are non volatile solids. ठीक है, मतलब इनमें एक तो कार्बन कंटेंट नहीं होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड होते हैं. और आप इसको फिक्स्ड सॉलिड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए यू हैव टू जस्ट हीट अप द टेस्ट सैंपल. और इससे पहले हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन से होते हैं. आर द volatile solids and these are biological biodegradable solids. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सॉलिड या फिक्स सॉलिड्स तो कैसे आप निकाल सकते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड इसको हम लिख लेते हैं IS इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, और इसको लिख लेते हैं हम OS ऑर्गेनिक सॉलिड. इन ऑर्डर टू फाइंड inorganic solids, what we'll do, we heat up the test sample at around 600 to 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट कर दीजिए. द रेजिड्यू लेफ्ट will gives you that will give you inorganic solids, राइट. तो देखो, ऑर्गेनिक सॉलिड्स कितने रह जाएंगे? टोटल सॉलिड्स आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही लिए हैं, तो इसमें से आप इनऑर्गेनिक सॉलिड माइनस कर दीजिए तो आपके पास ऑर्गेनिक सॉलिड्स आ गए. तो हम कह सकते हैं टोटल सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू दो तरह की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं. एक तो आप कह सकते हैं डिसॉल्व सॉलिड्स एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड्स को. और आप कह सकते हैं टोटल सॉलिड्स कैन बी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. ठीक है, this is the way you can find. So this whole process is basically termed as gravimetric method of finding suspended and dissolved solids.
दोनों आप पता कर सकते हैं। बेसिकली जो डिजॉल्व सॉलिड्स हैं, डीएस, डीएस इज योर केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर इज टर्बिडिटी। इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं परमिसिबल लिमिट कितनी है एज पर परमिसिबल लिमिट फॉर टीडीएस, that is total dissolved solids, TDS is 500 milligram per liter. This is as per IS 10500 2012। ठीक है, उसमें परमिसिबल